तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी खड़गपुर में। और हमारे साथ अभी योगेश हैं। योगेश मेरे सीनियर थे आईआईटी बॉम्बे में। और इन्होंने इस बार आईएसएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है जो भी हुआ है, और आरबीआई में भी इनका थर्ड रैंक है आरबीआई के जॉब में। तो एक्चुअली ये आज आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे गाइडेंस में, जैसे कैसे आईएसएस की प्रिपरेशन करें या आरबीआई का जो ग्रेड बी वाला जॉब है डीएसआईएम का, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये दोनों क्वालिफाई किया है। और इनके बारे में मैं बताऊं तो इनका प्लेसमेंट भी हुआ था, क्योंकि मेरे सीनियर थे बॉम्बे में। और ये हमारे यहाँ पर आई थिंक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर थे वहाँ पे, है ना? दोनों लाइक फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, सेकंड ईयर डिपार्टमेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी थे। हाँ, तो आप काफ़ी एक्टिव थे स्टूडेंट के हेल्प में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम योगेश। एंड मैं चाहता हूँ एक बार थैंक यू सो मच। आप एक बार इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, शुरू से लेके अभी तक जो आपका जर्नी रहा है स्कूल से लेके, मतलब कहाँ से हैं, सो दैट स्टूडेंट जान पाएंगे, फिर वो समझ पाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। First of all, hello everyone. Myself Yogesh Kumar. I am from Faridabad, Haryana. I have done my schooling from the same place, Vidya Mandir Public School, 11th and 12th, Faridabad only. And after that, I have done Bachelor's of Honors in Statistics from Kirodimal College, University of Delhi. It's a 3 years program. And after that, I have cleared the JAM and joined the IIT Bombay. And I have done 2 years of Masters in Applied Statistics and Informatics. So during the IIT tenure, I did an internship in Accenture for 2 months and got the PPO. So I didn't sit for the placements. I accepted the pre-placement offer. So after my masters, I joined the Accenture and worked there for almost an year. So after that, I started my preparation and I resigned from my job. So I gave my first complete attempt after the preparation in 2022. Then the second attempt in 2023, which I recently cleared. And alongside, I prepared for Grade B RBI as well, and I cleared that too. So yeah, my joining will be soon and from 15th of April. ओके नाइस। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग टू जॉब साइमल्टेनियसली, वो भी इतने प्रेस्टिजियस। तो एक तो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि मतलब क्या आपने जॉब छोड़ के आईएसएस का मतलब प्रिपरेशन क्यों चूज किया, मतलब? Actually, to be very honest, it was my personal choice. Like my elder brother, he's 2 years elder than me. He's already in corporate sector and into the same field, data science. So my brother is in Deloitte, US, in the data science field only. So we are only two brothers, and we both have same career. So in the long run, I think I should have some stable job and little bit, sorted sort of, so that I can give family time and in the futures as well. So I just it's my personal choice. I wanted to be in a grade A service, and since I have statistics background, I chose Indian Statistical Service and RBI side by side. ओके, तो मतलब आप आईएसएस ही ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली दो में से एक चॉइस होगा तो, है ना? Yes, yes, हाँ। yeah. There are perks and pros and cons of each service, which we will discuss later on. हाँ, तो ये आपका, जैसे आप जब बॉम्बे में थे तो उस समय तो आपको माइंड में नहीं रहा होगा कि आईएसएस करना है, उस समय तो बाद में आया होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. As the all students, we were very comfortable with the placements. हाँ, इनिशियली थोड़ा मनी का भी रहता है कि थोड़े पैसे वैसे कमा ले। No, no doubt, exactly. अच्छा, आप में से जो लोग अभी लाइव हैं उनमें अगर डाउट्स हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, हम लोग बाद में वन बाय वन आंसर करेंगे। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बाद में एक बार हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा, इंटर्नशिप का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे बच्चे हमारे यहाँ जैम के बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी जो ज्वाइन, हम्म. तो कुछ लोग जैम वाले भी होंगे, तो इनको भी बहुत क्यूरियस रहता है कि इंटर्नशिप में करना क्या होता है। जैसे आप जब इंटर्नशिप कर रहे थे एक्सेंचर में, तो उसमें क्या करना हम्म. है? उसमें सिखाते हैं काम, या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पहले से आना चाहिए? इंटर्नशिप के अलग अलग फेज होते हैं. जो मेरा मानना है, अगर आप मास्टर्स में इंटर्नशिप करते हो, सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम दे एक्सपेक्ट यू नो समथिंग एंड दैट्स व्हाई यू सेलेक्टेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दे अलॉट योर डिपार्टमेंट और विच अदर थिंग्स. So even if you are selected and you are not prepared, then you should, because you get ample time before you join the internship. For example, if you are getting internship in August, June, December, etc., you have 5 to 6 months. So it's better to be prepared, and then there are high chances you will get a good project, and then you will learn a lot. So internship is that phase where you learn a lot and decide in which direction you want to go.
एग्जैक्टली। एक्चुअली आप एक राइट पर्सन है जो ये भी गाइड कर सकते हो बच्चों को कि प्लेसमेंट में कैसे करें, क्योंकि आप खुद प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी थे और आपका भी प्लेसमेंट हुआ था। तो अभी जो है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट, आईएसएस आरबीआई तीनों डिस्कस करेंगे। श्योर। और जैसे प्लेसमेंट का हुआ था कैसे, मतलब पीपीओ के चांसेस, जैसे इंटर्नशिप में ऐसा क्या करते हैं कि पीपीओ के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपने ऐसा क्या किया आपको पीपीओ मिला? सबको तो नहीं मिलता है ना पीपीओ, तो ऐसा क्या रहता है? यार जितना what my experience है and what I personally observe, it's just 2 months, and whatever the task is given to you, if you show the company that you are ready to put more efforts, instead they just check your personality. For example, if they give an assignment or a particular project where where they gets idea. For example, in my particular experience, there was a new idea extension is opening up, so they wanted to check whether we can bring more ideas to it. So it was just a starting phase of that a particular project, and there was no client in that. So we were building new data sets and building new algorithms according to the problem. So they just check whether how you are interacting with your senior, even if you are stuck in a problem, how much efforts are you going to put, and how much are you coordinating with your seniors, managers, and etc. So it's all about coordination and how you are managing your time, and on the basis of guidance, whether you accepted the guidance and providing inputs to the company. And even if you don't know, you know you are at zero, so they check in 2 months what you have learned, whether the task is given to you, it's completed, or it's like you have learned a lot in that phase. So it's just a attitude check, I would say, not the I would say they check your knowledge in that 2 months, that you are good in communication, you are good in with the managers, you are helpful to them, and you seek guidance and they provide it, you accept that, and you are on time, you are more hardworking. So these things get checked in that phase. राइट। जैसे अभी जस्ट जैम का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चे हमारे से क्वालिफाई किए अभी भी होंगे, तो उन लोग मैं मुझसे कभी यार पूछते रहते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ 3-4 महीने में, जिससे आईआईटी में जाने के बाद मेरे हम्म। इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाए, तो उसका कुछ बता दीजिए। यार अभी जैसे अगर जितना मेरे को पता है, आई वुड से लाइक संतोष एज वेल, वी यूज टू स्टडी अ बुक साइड बाय साइड, ISLR. So I personally believe it's a very good book to dive into a new data science field if you have just stats background or maths background, anything, because it's very simple, and even you haven't done coding in your past. Yeah, same. ये बुक है ना? Yeah, this one. हाँ, Yeah, yeah, तो yeah. पीपल्स कंट्री अभी मेरे पास है ये। हाँ हाँ, मतलब पर्सनली आई बिलीव ये इतनी अच्छी खासी बुक है कि फर्स्ट इट विल गेट यू इंटरेस्ट इन डेटा साइंस, प्लस इफ यू डोंट हैव कोडिंग एक्सपीरियंस, इट्स वेरी सिंपली रिटन एंड you can learn side by side our software, and there are labs in it, so the concepts will be cleared. You will get to know a lot of new things, plus a technical expertise in your resume, and it's a really good book. So in your free time, if whether it's taking 2 months, 3 months, 4 months, I would suggest to complete this. Yeah. तो ये आईएसएलआर बुक है, इसका फुल फॉर्म है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग विद एप्लीकेशन इन आर। सो गूगल करोगे पता चल जाएगा, जो बच्चे अभी जैम दिए हैं अगर। And yeah, it's just one thing. Apart from it, since in IIT Bombay placement internship, there are various aptitude tests, etc. In your free time, you can focus on improving your IQ on the basis of aptitude, reasoning, logicals, and just communication skills. If you're like, there are many students who are not from good background and other universities, so it's better to have a good communication skills. So start writing a diary in English, start talking to people in English. So building side by side that skill. एग्जैक्टली। सो अब प्लेसमेंट से रिलेटेड जैसे आपने बताया, अच्छा जैसे मान लो अभी जैसे बच्चा प्लेसमेंट में कितना है, मतलब एक तो बच्चा कई बार कंफ्यूज रहता है कि कैसे, जैसे कुछ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना बॉम्बे जाके कि मेरा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो मतलब प्रोग्रामिंग को लेके ही बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग पहले से आना हम्म। जरूरी है? जैसे आप बॉम्बे ज्वाइन कर रहे थे, क्या आपको प्रोग्रामिंग आती थी पहले से? आई नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब आपने वहीं सीखा है? हम्म, हाँ वहीं पर बिल्कुल। हाँ, तो जो बच्चे जिनको नहीं आते, कोई बच्चे डरे रहते हैं कि सर मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं है, क्या वहाँ मुझे जॉब मिलेगी या इंटर्नशिप होगा, तो मतलब होगा वहाँ जाकर सीखना पड़ेगा, है ना?
इसमें जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में ना, आई वुड से कि सबको डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक माई पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर वाज अ C++ ऑप्शन इन माई 12th, बट आई डिडंट चूज इट जस्ट बिकॉज आई वाज अफ्रेड एज एवरीवन एल्स कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, सो आई क्विट इट. Then when I went to my bachelor's, I again, where I was afraid of C++, I had the option, but I didn't choose that as an elective. But when I went to IIT Bombay, it's compulsory. So at any time, if you're working in corporate sector or any data science field, at any time you have to learn these skills. So maybe couple of months would be difficult, but once you cross that, things will get easy over the period of time, and it's just the starting phase. So starting phase is the most difficult part. Rest will fall easy. यस योगेश, तो पहले हमारे टाइम पे C++ था, मतलब मैं आई थिंक लास्ट बैच हूँ। Yeah. उसके बाद उन्होंने अब R कर दिए हैं। Okay. और Yes, C yes. प्लस हमारा बीटेक वालों के साथ चलता था ना हम लोगों का। Hmm. अब वो चलो Yeah. डिपार्टमेंट लेवल पे कर दिया, तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तो Then उनको it's C++। more easy now, so there is हाँ। no point of afraid. But हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप आर सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट मार्क्स के लिए. when you search for job, it makes your own work very easy. अगर आप एक्सेल में कोई काम करते हो या कुछ करते हो, it really makes your work easy. So take it as a, like, it's making your work easy, so you will learn a lot in that. yes। अब हम आते हैं आपके ISS जर्नी पे। जब आप एक्सेंचर जॉब ज्वाइन कर लिया आपने, बैंगलोर में था आपका? Actually it was COVID time, so it was work from home, but office was in Gurgaon. गुरु, अच्छा ठीक है। तो जब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया होम से ही, तो फिर पहली बार कब माइंड में आया कि आपको ISS करना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? Yeah, to be very honest, like my batchmate Sujit and my BSc honors classmate Dipun was preparing for these exams. So after 5 to 6 months, my and my brother used to work together, like घर पे ही. तो उस टाइम पे लगा कि दोनों की बहुत सेम सेम जर्नी है और सेम सेम रही और इन द फ्यूचर सेम ही रहेगी, बिकॉज ही हैज डन इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो रीजन बीइंग कि दोनों का बिल्कुल ही सेम फील्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में. तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि सिंस आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड, आई हैव मोर चांसेस देन माय ब्रदर टू चेंज माय करियर. So that's why I resigned within a year and started preparation after my job, not the during the job. अच्छा, तो मतलब आपने पहले डिजाइन किया फिर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। Yes, yes, yes. Because ISS का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले से सोचा हुआ था कि साइड बाय साइड प्रिपरेशन, इट नीड्स 1 or 2 years of complete preparation, no doubt. बट इसके लिए काफी कॉन्फिडेंस चाहिए। मान लो जैसे इसमें एक रिस्क फैक्टर भी है कि सपोज बाय द वे नहीं होता, तो फिर क्या करते आप? Oh, I know myself. I have certain skills, like I do freelancing and other things. That let's take 2 years. I have taken that time. Then there are other options as well. It's not like if I am resigning, it's end of my career. हम्म। I can again join the corporate sector. I have reasons why I quit my job, and I'm skilled enough. So यस, मतलब भरोसा था कि बाद में फिर से हम कर हाँ, सकते हैं बिल्कुल. जरूरत पड़ी तो अब Yeah. जब से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कैसे किया? जैसे कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट करना चाहे, आपने कैसे कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन? कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रही, मतलब स्टार्टिंग डे से लेके क्वालिफाई करने तक क्या क्या किया आपने ISS के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि RBI के लिए? मान लो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है बिना प्रिपरेशन के, जो मैं आपको ऐसे ऑनेस्टली बताऊं कि जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जस्ट जॉब खत्म होने के साथ ही दिया था, कि वो 1 महीने के आसपास था. एंड वो मैंने इसलिए दिया कि सो दैट आई कैन गेट टू नो कि मैं अगर बिना पढ़े ISS का एग्जाम देता हूँ तो हाउ मच प्रिपेयर्ड आई एम. तो वो एक आइडिया लग जाता है. और 6 ISS का एग्जाम लाइक 3 days होता है, 6 एग्जाम बैक टू बैक. तो एक एनवायरनमेंट का पता चल जाता है कि हाउ मच टाइम आपके पास, कितना टाइम होता है, कितनी देर आपको बैठना होता है, एंड किस टाइप का वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है. UPSC के हेडक्वार्टर में अगर एग्जाम होता है, तो जस्ट टू गेट द वाइब ऑफ द एग्जामिनेशन, माय फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट प्रिपरेशन. इससे यू विल गेट टू नो वेदर यू आर 10% prepared, 20% prepared. So if you are starting the preparation, just give the first attempt अपना डोर खोलने के लिए. ऐसा ना हो कि वेन्स यू आर प्रिपेयर्ड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, वहां पे आपको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा एंजाइटी हो जाए एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से. तो वो पहले से ही एक बार एक्सपीरियंस कर लो. तो आफ्टर दैट आई टू लाइक इन द फर्स्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय एंटायर सिलेबस, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है, इट टेक्स टाइम. एंड दैट ईयर आई फॉल शॉर्ट बाय point I think 0.7 marks, and it didn't clear the written part. In the next attempt I cleared mains and interview both. And during that phase, if anyone wants to start the preparation, first understand the entire syllabus,
टॉक टू द सीनियर्स व्हाट्स देयर स्ट्रेटेजी, उनकी पर्सनली क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है, और जो आपका एक कॉमन ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, ऐसे नहीं कि आप घर पे अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं. आई ऑलवेज हैड अ डिसेंट like I had always a decent friends during IJM preparation as well, and this around this ISF preparation as well. It helps you keep consistent, and whenever you have doubt, it keeps you involving. तो एग्जैक्ट। अगर स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि या इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट श्योर हाउ मच विल बी एबल टू वाइब विद मी देन, बिकॉज इट्स completely different. Everyone has their own pros and cons of each service. So coming to that, I primarily wanted to focus on the objective part. Reason being कि I don't have good handwriting, so I wanted to focus completely on objective, and I scored second highest in the objective parts दोनों को मिला के. So coming to that, first of all, if everyone knows, then it's fine. Otherwise, there are six papers. First two GK GS, then two stats objective, and then two stats subjective. So English के लिए there are essays and other things. You can start reading newspapers and very common topics. Just give me a moment, हाँ, नो please. प्रॉब्लम, या। चलो टिल देन, बाकी जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, जैसे जिनके क्वेश्चन है आप चैट में लिख सकते हो, अभी योगेश आएंगे तो वो आपको आंसर करेंगे वन बाय वन, या हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस। सर आपने आरबीआई को छोड़ के आईएसएस क्यों ज्वाइन किया, करियर अपॉर्चुनिटी? आई थिंक आईएसएस हैज बेटर एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी, वो बताएंगे खुद ही। अलदाउ मैं बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने सेशन किया था उनके साथ, क्या सुजीत के साथ, सुजीत प्रधान के साथ। सुजीत प्रधान और ये योगेश क्लासमेट है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी। तो वो पहले क्वालिफाई किए थे, फिर उनके गाइड किया। I'm so यस यस। sorry, but yeah. हाँ, नो प्रॉब्लम। सो आई विल टेक फ्यू मिनट्स लाइक इसमें डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में, जो मैंने पर्सनली की ट्रिक्स यूज करी एंड जो मेरे को पर्सनली हेल्प किया. लाइक इंग्लिश के लिए आई स्पेसिफिकली फॉलो सर्टेन टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल, हर साल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स, इनसे रिलेटेड आते ही आते हैं. तो आप किस हर टॉपिक्स के बारे में कहीं से भी आप रेगुलर पढ़ते रहो, वेदर इज दृष्टि साइड, यूपीएससी, न्यूज़पेपर, या अपने खुद के आसपास ऑब्जर्वेशन. जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, अपने घर के आसपास देखते हो कि एनवायरनमेंट को क्या क्या फर्क डालते हैं. जैसे आप शहर में रह रहे हो तो कंक्रीट जंगल्स होते हैं. जैसे आपके घर के आसपास ज्यादा पेड़ है तो वो ऑन एन एवरेज 2 to 3 डिग्रीज का टेम्परेचर अपने आप सराउंडिंग्स में ला देते हैं. अगर आपके घर के आसपास ज्यादा पॉन्ड्स हैं तो उससे डस्ट सेटल होती है. तो वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग इन योर एरिया प्लस द थ्योरेटिकल वट एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम द न्यूज पेपर एंड बुक्स, जस्ट रिलेट की इंग्लिश जीएस में, तो वो इंग्लिश में कि जो भी अपने आसपास देख रहे हो वो आप बस माइंड में रहो कि ऐसे रटना नहीं है कुछ भी, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह. तो सर्टेन टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो वेबसाइट से, दृष्टि जो भी यूपीएससी का मटेरियल होता है, एंड वो 5-6 टॉपिक्स गुड इनफ है, आपको एक ना एक उनमें से पक्का टकरा जाएगा एग्जाम में. And grammar, for the grammar as well, you can follow any YouTube channel or specific books जहाँ पे you can improve your grammatical skills. For example, प्रेसी राइटिंग के लिए एक स्ट्रेटेजी है जो YouTube पे मोस्टली विल शेयर. सो इट्स नथिंग एल्स, इट्स वेरी कॉमन टू ऑल. सो आई विल नॉट deep down into that. Coming to GS, which is mostly people face difficulty in this. GS में क्या होता है, there are 20 questions, 5 from each subject, 5 from polity, 5 from history, 5 from geography, 5 from economics. So mostly people will, what they do, they study the entire NCERT books, and they watch a lot of YouTube, what I call marathon sessions, etc. But what I have observed over the last 2 years कि जितने भी 20 क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी एसएस में, वो मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड होते थे हर सब्जेक्ट में, वेदर इट्स पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा. तो आप दृष्टि की जब भी कोई वेबसाइट खोलोगे उसमें मेंस आंसर राइटिंग होता है, एंड उसके आप 7 to 8 मंथ्स के अगर रेगुलर क्वेश्चंस उठाओगे सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू विल फाइंड कि 20 क्वेश्चंस में 18 to 19 रिपीट होते हैं. In my 22 attempt as well, 2023 as well, I haven't watched any YouTube channel. I haven't read any NCRT books. I just
read the Drishti IAS के mains answer writing over the last 8 to 9 months, and in my both the attempt I scored really well, and I know the 18 or 19 questions out of the 20. So that's like in your free time, take half an hour or so, just read the Drishti website, mains answer writing, geography, history, polity, economics, current affairs, whatever. And during that phase as well, you will be prepared for English as well. And definitely you will get around 15 questions out of 20 from that, because of current affairs include करते हैं हर topic के, and that's the pattern of the UPSC. So GS ka, this is which like my senior has taught me, Yogesh Rana, and I follow the same steps. Drishti IS, and it was very real useful for me personally. So I think GEGS, coming to the objective one. ऑब्जेक्टिव वन लाइक लोगों को मोस्टली डिफिकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज इसका सिलेबस ज्यादा है. इट हैज 4 टॉपिक्स: प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर. सो इफ आई राइट इट एंड देन, अगर आपका स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है, आपको लगेगा कि लेट्स फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स मोर, बिकॉज आपने उसके बारे में ज्यादा पढ़ा है. बट इफ यू are very practical and observe how many questions are there, numerical analysis and computer has equal weightage. Like 40 questions in paper one will be of, they have half weightage. So even if you have statistics background and you take yourself granted that you will get good score in paper one, it's not the case, because numerical analysis and computer has equal weightage. So if you are good in stats, you should be good enough in numerical and computer equally to get the more marks. And for probability and statistical method, I specifically like Ritte Mana proper S.C. Gupta ke whatever remarks they have given, whatever examples they have solved, few exercises as well, वो आप read S.C. Gupta at least 10 times so that you get to know किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, and exam में वहां से आता ही आता है. एससी गुप्ता, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एवरेज टॉपिक. लाइक मैंने खुद के ज्यादा नोट्स नहीं बैठे, बट आई यूज टू रीड अगेन एंड अगेन, जो इंपॉर्टेंट लगा हाईलाइटेड, एंड रिमार्क्स को जनरली एग्जाम में कोई भी टफ क्वेश्चन आता है, 2-3 रिमार्क्स या 2-3 कॉन्सेप्ट मिलके उस क्वेश्चन को एक लाइक विद इन अ मिनट सॉल्व कर देते हैं. तो इसलिए बार बार रीड करो कि एक कोई भी क्वेश्चन आता है, यू रिलेट वट एवर यू हैव स्टडीड, वेदर इट्स रिमार्क, एग्जाम्पल, एंड यूज दैट इन दैट क्वेश्चन. And so for paper one, I essay Gupta I would prefer कि बहुत बार go through that. So I think Sandesh, people are asking question. Once I cover the हाँ, यस यस. strategy, then we हाँ will हाँ, go with the हम लोग questions. क्वेश्चन आंसर एंड में करेंगे, ये सब क्वेश्चन वन बाई वन आंसर करेंगे. पहले आप बता दीजिए पूरा. हाँ हाँ. So हाँ, probability and statistical method के लिए essay Gupta, and read again and again each and every example, remarks, whatever they have given, whether it's easy or difficult. कि मेरे को अभी भी याद है लास्ट ईयर क्या होता है कि बहुत डिटेल में कोई एग्जांपल या क्वेश्चन था तो लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसका हाफ भी अगर आप पढ़ोगे, उसका कहीं ना कहीं वो उस क्वेश्चन में यूज था. तो जितना भी टाइम मिले, गो थ्रू विद एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. When it's come to the numerical analysis and computer, coming to the computer, there are two books, V. Mathereja and E. Balaguru Swami. तो जनरली व्हाट पीपल डज कि मान लो एक चैप्टर वो न्यूमेरिकल का कंप्यूटर का पढ़ते हैं, री मथरेजा या कि बालागुरु सर ने, वो खुद के नोट्स फिर बनाने लग जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, खुद के वो नोट्स बनाने लग जाते हैं. तो जो सेम चीज ऑलरेडी बुक्स में है वो आप बस लिख लेते हो, लेकिन आप दो दो महीने बाद अगर खुद देखोगे, नोट्स भी आपके उतने ही है, बुक्स में भी वही सेम चीज लिखी हुई है. सो व्हाट स्ट्रेटेजी आई हैड फॉलोड कि जो भी दो बुक्स है, रीड देम एटलीस्ट 10 times, underline them, read them again and again, so that you will get a memory picture of the book itself. आप नोट्स में भी वही चीज पढ़ोगे जो ऑलरेडी बुक में मेंशन्ड है, एंड वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. व्हेन इट्स कम टू द एग्जाम, फिर आपको नोट्स किस हिसाब से बनाने हैं, इस हिसाब से नोट्स बनाने हैं कि हर चैप्टर के 2 पेज से ज्यादा नोट्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस में ये है, ये इनपुट डिवाइसेस डिवाइस से ऐसे अलग है, तो शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर जस्ट बिफोर कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द एग्जाम. उससे पहले रीड एंटायर बुक अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. एंड उसके जो बैक एक्सरसाइजेस है, दोनों बुक्स की एग्जांपल्स हैं. ई बाला गोस्वामी में लास्ट में कुछ अपेंडिक्स है जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आया हुआ है, तो वो चैप्टर्स में नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स में वो चीजें मेंशन्ड है, जैसे इमेजेस से रिलेटेड GIF, JPJ, JPEG इमेजेस की कुछ इंफॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं से उन बुक्स में से आते ही आता है. यू विल डेफिनेटली विल गेट 15 आउट ऑफ 20 अगर आपने 5 to 6 टाइम उन दोनों बुक्स को पढ़ा है. मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बुक को अच्छे से पढ़ो, दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ो. नोट्स बनाने में डोंट वेस्ट योर टाइम, बट रीड देम अगेन एंड अगेन. जस्ट बिफोर द एग्जाम मेक शॉर्ट नोट्स so that you get a memory picture shorts में.
and try to do exercises of each. That's the only for computer. And coming to the numerical analysis, you can have a look at from the Google itself. I think one book which I followed, या H6 सक्सेना, इसका क्या है कि न्यूमेरिकल से यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी वन ऑफ आवर सीनियर नोट्स, निपुण, अस्तित्व एटसेट्रा. तो नोट्स की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. देन सॉल्व ऑल द PYQs. व्हाट हैज चेंज्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, दैट न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस H6 सक्सेना से डायरेक्ट आते हैं. तो try to do the questions and memorize the few results which you think ki good enough. And then I use the same strategy, read again and again, again and again, जहाँ से questions आते हैं specific books, and definitely it's going to help. So in numerical analysis it's HC Saxena, computer में जो दो मैंने books बताई, probability and statistical में SC Gupta. So these 3 to 4 groups you should do again and again whenever you get time. And PYQs, solve them at least 4 to 5 times, first with the help of notes, then without the help of notes. So that's the strategy for paper 1. And just kabhi bhi lage ki you are good in stats, be grounded that numerical and computer are have equal weightage. So be strong in that as well to score the good marks in paper 1. So coming to the paper 2, paper 2 has 3 sections: linear model, inference, and the official sets. Linear model you can cover from Google or any Montgomery book, etc. But just focus on the previous year over the last few years. That's more than sufficient, because they have asked him ample questions and significantly change concept में अब तक नहीं आया. But inference में around 50 questions आते हैं. I have followed 3 books, which is S.C. Saxena, Kesela, Berger, and Rohatgi. So these 3 books are more than sufficient if you read them thoroughly, like more than sufficient for the inference part. सो S.C. गुप्ता आपने पहले भी पढ़ी होगी, उसमें 2 ही इन्फ्लुएंस के चैप्टर हैं, बट एट द सेम टाइम रोहतगी के डायरेक्ट क्वेश्चंस, कैसेला बर्जर के डायरेक्ट रिमार्क्स और एग्जांपल हर बार एग्जाम में आए, नहीं आए तो उनका क्लब करके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आए हुए हैं. सो इन्फ्लुएंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, इट्स रियली गुड. Coming to the official stats, the pattern has changed over the last few years. पहले static portions में ज्यादा आता था, but over the last few years 4 to 5 questions आराम से change होते हैं कि आप कोई भी ministry का data उठाओगे, educational stats, labor stats, तो आप website पे से जो common terms mentioned है, HP Human Development Index या other, so website से ऊपर से पढ़ना है, plus static portion. संतोष, बोरिंग तो नहीं हो रहा या फिर ऐसे आई शुड? नहीं नहीं, ठीक है, एक बार बता दीजिए, सही है, कोई उससे पता चल जाएगा. और क्या, हाँ, प्रिपरेशन इज अ लाइक गोइंग दिस इज प्रोसेस. विच, हाँ, जहाँ पे ट्रिकी पोर्शंस हैं वो मैंने एक वो बताया कि बार बार बुक्स पढ़ने वाला न्यूमेरिकल कंप्यूटर का सेम, और दृष्टि वाला जो जीएस के लिए था. ओके, तो ये आपने अभी तक पेपर 1 का उसका बता दिया ना, जीएस वाला और पेपर 1 और 2, हाँ. 2 एंड का. हाँ. पेपर 2 बहुत स्कोरिंग होता है कि इन्फ्रेंस 50 क्वेश्चंस हैं और लीनियर मॉडल्स में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ अब तक पोर्शन में. तो जो अब तक चल रहा है वो फॉलो करो. ऑफिशियल स्टैट्स में थोड़ा चेंज आ रहा है, तो 20 क्वेश्चंस में कि पैटर्न की आपको जरूरी नहीं, स्टैटिक पोर्शन में से आ रहा है कि वेबसाइट पे से भी अब आपको कुछ कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी. फिशरीज का डेटा होता है तो किस तरह का डेटा होता है, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं. एजुकेशनल का डेटा है, क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह का डेटा, कौन कौन से सर्वेज रिसेंटली, कौन कौन से सर्वेज चल रहे हैं. तो थोड़ा ये डायनामिक सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल स्टैट्स में अब रहना पड़ेगा. स्टैटिक पोर्शन से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, बट डायनामिक से भी अब काफी क्वेश्चन आ रहे हैं. So paper 2, I think if anyone has certain doubt we can cover in deep, but ये ऊपर से मैंने अभी हाँ, बताया. और 50 question inference with these 3 books, like I again say again and again, रोहतगी, कैसल, बर्जर, S.A. Gupta, every remark is important, every example, every exercise question, and it is equally helpful in RBI as well, not just ISS, because inference part ऐसा है कि जो दोनों में है. And coming to the paper 3, paper 3 is the most difficult, as everyone says. सैम्पलिंग, इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस. सो आई प्राइमरीली इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले अगर मार्क्स लाने हैं, कमिंग टू एक मार्क्स और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीज हैं. मार्क्स लाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर इजी टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल हर साल इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं. ट्राई टू कवर दैट, एंड इट हैज वेरी लेस सिलेबस. Try to cover the questions, examples from whatever, wherever you are covering.
So, index number demand analysis, S.A. Gupta, FAS, Fundamentals of Applied Statistics, it's good enough. Solve each and every example and exercises. Definitely, you will get a decent score in this particular topic. Now, it's the easiest. So, let's come to the little bit difficult. I completed sampling in very detail. Reason being कि आई लाइक सैम्पलिंग, और उसकी जो मेरे को कॉलेज में थे, मेरे सर ने काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ था मेरे को, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी। तो सैम्पलिंग मेरे को ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है कि दो के दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आई शुडेंट मिस दैट। क्योंकि पेपर 3 में आपको थोड़ा ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग इन योर एग्जाम. So there is a trade-off. Whatever you're doing, make a particular topic very strong, and then the other one little bit easy, or you can leave something. So in my particular case, sampling मैंने बहुत अच्छे से की थी, and over the last few years, sampling में questions भी बाहर से आ रहे हैं, not just the theoretical. For sampling, IIT कानपुर के Professor Shalab, I followed his notes, and they are really good enough. But just for theoretical purpose, जैसे questions over the time change हो रहे हैं, questions नए नए आ रहे हैं, तो सैम्पलिंग की एस संपत एंड कोकरेन की बुक है, वहां से आप एग्जांपल एंड एक्सरसाइज करो। डिट्टो सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं इस ईयर भी, लास्ट ईयर भी। तो हर बार एक या दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप सैम्पलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू कवर द क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स फ्रॉम दीज बुक्स, क्योंकि डिट्टो आए हैं यहाँ से। तो आई मैंने अपना सैम्पलिंग का स्ट्रॉन्ग किया था इन दो बुक से। Coming to the econometrics, I haven't followed any book. I have just read Shalab's notes, and they are very good enough to cover the theory part. Because econometrics बहुत ज़्यादा syllabus है और बहुत deep भी है. तो just cover the previous years and the notes itself. For time series, I followed Tanujit sir notes, and my senior Astitu sir, his notes are really helpful, and time series is sufficient. सो अगर आपको मार्क्स लाने हैं, विच आई जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, आई फॉलोड, मैंने टाइम सीरीज स्ट्रॉन्ग किया था, इंडेक्स नंबर डिमांड एनालिसिस एंड सैम्पलिंग 100%, एंड इकोनॉमेटिक्स पूरा किया था, नॉट इन डिटेल। या सो दैट्स पेपर 3। एंड पेपर 3 में आप लाइक मोस्ट डिफिकल्ट है, तो प्रैक्टिस इसमें सबसे ज्यादा चाहिए होगी। सो वी विल कवर लेटर ऑन इट। Coming to the paper 4, it's entirely depends on you which topics are you choosing. I have chosen SQC and vital stats, but whatever you are comfortable with, you can choose them. But what I have taken suggestion from my seniors and other people, no, like you don't have to be selective in this, because it's on the last day. Generally what happens ki if you are taken a technical paper, you tend to forget technicalities. So SQC and demo is a little bit theoretical English sort of. So if you study them, you will not be forget them. It needs less practice, and syllabus is very less in SQC and demo. So that's the reason mostly people choose it. So I think Santosh, I have covered सिलेबस, everything in short. हाँ, ISS पार्ट है ना? But हाँ। yes, ISS. And coming to the strategy overall, like it's the paper wise, ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना ज्यादा आसान है, बिकॉज आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता ज्यादा उसमें। सो इफ यू आर नॉट गुड इन ऑब्जेक्टिव, सो ट्राई टू डू put more efforts in objective. Otherwise, because mostly people are doing that, if you don't follow that, you will be lag behind. So even आपको पसंद नहीं है, you have to do it, like to get the more marks. And there's nowadays a lot of guidance is available to the students and other factors, so you have to make your objective very strong. And so you can't negotiate it if you are not good in objective key. I don't have speed, I don't have time, yeah, I don't have high IQ. You have to learn these things if you want to have a good score in object. Coming to the subjective, it needs really good practice. So दोनों side by side ये आप कर सकते हो. एंड एक अनदर पॉइंट विच आई वांट टू कि जैसे मेरे फ्रेंड्स होते थे काफी, अगर कोई भी वो डाउट पूछते हैं कुछ है, ऐसे नहीं कि आप फिर नोट्स खोल रहे हो कुछ खोल रहे हो कि अब मैं पढ़ के इसका आंसर करूंगा। आप सेम टाइम पे नोट्स खोलो और उनके डाउट सॉल्व करो। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स यू इन यू कांस्टेंट टच। वो माइंड में चीजें रहती हैं कि मान लो मैंने अगर इंडेक्स नंबर की रिवीजन नहीं करी, इन्फ्लुएंस की रिवीजन नहीं करी, बट मैं साथ के साथ उसको देख रहा हूँ, तो एक लंबा गैप नहीं आता। अगर आपके फ्रेंड्स कोई भी डाउट पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे जो चैनल्स हैं, हो सकता है जो अब लोग डाउट्स पूछ रहे हैं आप उनको सॉल्व करो, लेकिन इग्नोर मत करो किसी भी चीज को। इससे आपकी रोज रिवीजन होगी। जो भी लोग बाकी डाउट्स पूछ रहे हैं, हो सकता है ये आपको भी आए, या आपको नहीं आ रहे, तो इट मीन्स आप उनसे ऊपर हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो।
तो रोज डाउट्स जो भी होते हैं टेलीग्राम चैनल्स या पर्सनल ग्रुप्स जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बनाए हुए थे, बी वेरी वेरी एक्टिव इन दोज थिंग्स, बिकॉज ये साइड बाय साइड रिविजन्स में हेल्प करती हैं। ऐसे नहीं कि आप बस बुक्स लेके बैठे हो और वहां से रिविजन हो रही है। ठीक है योगेश, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने एकदम, मतलब आईएएस पूरा टॉपिक वाइज एक एक पेपर लेके मैंने स्ट्रेटजी बताया, सो ये बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों को। अभी थोड़ा हम आईएसएस पे उस पे आएंगे, आरबीआई पे। तुम आईएसएस और आरबीआई की स्ट्रेटजी क्या डिफरेंट होती है सिलेबस की? और मुझे लगता है 1 मिनट में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, सेम लिंक से सब लोग ज्वाइन करो अभी योगेश। और जो चैट का मैंने फोटो ऑलरेडी ले लिया है, तो हम चैट 1 बाय 1 आंसर करेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट्स का ही जूम मीटिंग था, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो ओके। जाएगी 40 मिनट बाद। तो सब लोग सेम लिंक से आप फिर से ज्वाइन कीजिए एवरीवन, एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट 40 मिनट्स विद द सेम लिंक, है ना। और चैट के फोटोज है मेरे पास, तो आई विल आंसर वन ईच क्वेश्चन, हम योगेश से पूछेंगे 1 बाय 1, एंड देन हम लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, मतलब जस्ट अभी ज्वाइन करो सब लोग विद द सेम लिंक, ज्वाइन अगेन।